हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्ड ड्रिंक। आज हम पढ़ेंगे वर्ड ड्रिंक। आज हम पढ़ेंगे वर्ड ड्रिंक। वर्ड ड्रिंक का मीनिंग होता है पीना। वर्ड ड्रिंक का मीनिंग होता है पीना। और वर्ड ड्रिंक बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है। वर्ड ड्रिंक बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है। अब हम इस वर्ब की फॉर्म्स चेक कर लेते हैं। इसकी फॉर्म्स हैं V1 ड्रिंक, V2 ड्रैंक, V3 ड्रंक, V4 ड्रिंकिंग, V5 ड्रिंक्स। ये जो V5 है ड्रिंक्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही, शी और इट के लिए इस्तेमाल होती है। और यह वर्ड ड्रिंक की तमाम वर्ब की फॉर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। और अब हम इसका वर्ड ड्रिंक का अब हम यूज़ चेक कर लेते हैं, और यानी इसका यूज़ देख लेते हैं। यूज़ ऑफ वर्ड ड्रिंक। I drink tea. I have drunk tea. I am drinking tea. I have been drinking tea. I drank tea. I had drunk tea. I was drinking tea. I had been drinking tea. I will drink tea. I will. I will have drunk tea. I will be drinking tea. I will have been drinking tea. और अब हम देख लेते हैं कुछ एक्सेलरीज। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ एक्सेलरीज की। I can drink tea. I should drink tea. I could drink tea. I would drink tea. I must drink tea. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वर्ड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।